Om Shanti. Just sit back, relax, and go through a meditation experience. I relax my body. I visualize myself as a tiny point of light, a little star shining in the center of the forehead. This is I, the being of light. I am a soul. I am the master of my body. I am the master of my mind. I am the creator of my thoughts, feelings, words, and behaviors. I am a pure soul. I am connected to God, the supreme power, the ocean of virtues and powers. I connect to God's vibrations of purity, peace, love, wisdom. I absorb them fully. I experience these qualities in me. I immerse them in every karma. I
vibrate at a frequency of divinity. God's powers and blessings are my protection shield. I am pure. I am powerful. I play my roles with humility. I expect nothing from people. I am a giver. I give love to all. I give respect unconditionally. I am a peaceful soul. I accept every situation. I accept every person's behavior. I radiate love, respect, and care to every soul. I am a powerful soul. The power to tolerate, power to adjust, come naturally to me. I am a wise soul. I choose, I affirm, I visualize. My vibrations heal my body. My vibration change situations. My vibrations transform people. My vibrations can attract success. I create my destiny of happiness, health, and harmony. Om Shanti. Om Shanti. Yesterday we learned about ego, the meaning of true ego. What is the meaning of true ego? Ego is the attachment to the wrong image of myself. Today we are going to start the page from page number 117.
Consider a man who has a physical body to use for 80 years. During his lifetime, he also acquires various relationships, roles, wealth, property, and so on. First, he is the son, a grandson, a sibling, a friend, a cousin, and so on. Your sister is giving an example कि एक 80 years का एक old man who is in a physical body, means who is in his body, um, a man who has acquired a physical body to use for 80 years, means उसकी age बता रहे हैं कि 80 years उसकी age है और उसकी लाइफ टाइम में उसने काफी कुछ एक्वायर किया लाइक रिलेशनशिप्स रूल्स वेल्थ प्रॉपर्टी एंड सो ऑन. तो पहले वो क्या था, ही वाज सन ग्रैंडसन देन अ सिबलिंग अ फ्रेंड cousin and so on, means these are his roles. Years later he become a father and subsequently a grandfather. He is bound to meet and lose people too. In his professional endeavors, his roles and designations keep changing every few years. Means जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो वो उसकी लाइफ में जो जो चेंजेस आए, वो पहले एक सन था, फिर उसके बाद he became a father and then frequently say subsequently a grandfather. He is bound to meet and lose people too. मतलब उसकी लाइफ जर्नी में लोग आए और लोग गए. In his professional endeavors, his roles and designation keep changing every few years. Profession में भी उसकी लाइफ में काफी changes आए. कभी कौन सा role, कभी कौन सी position. He may start as a trainee engineer and move up the ranks to become the chairman of his organization. Someday he retires, but the attachment to his position can be so deep that he holds on to it as his identity. तो सिस्टर एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि वो जो जिस पोजीशन पे है तो वो उसको अपनी आइडेंटिटी मानने लग गया, दैट लाइक आई एम अ सीईओ, आई एम अ मैनेजर, आई एम अ ट्रेनी, मींस उसको अपनी आइडेंटिटी एज्यूम करने लगा. He even includes ex or retired as a prefix to his erstwhile designation on his nameplate. जैसे रिटायर हो जाते हैं जो, तो स्टिल दे राइट एक्स, और रिटायर्ड मीन्स देयर फॉर्मर जो उनकी पहली वाली डेजिग्नेशन थी उसके अकॉर्डिंग दे राइट ऑन देयर नेम प्लेट. When he dies, that man loses his body and leaves behind everything that he had acquired in 80 years. मतलब इतने सालों के बाद उसके पास जो जो भी था, इफ ही डाइज तो क्या होता है, वो सब कुछ यहीं रह जाएगा. He leaves his body and leaves behind everything. Whatever we have or acquire in lifetime is meant to be experienced and taken care of. Very important. जो कुछ भी हम यहाँ पे acquire करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, वो उसका हमें एक्सपीरियंस करना है, and we should take care of that also. We have a body through which we connect with the world. We have relationships. अब सिस्टर बता रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है. First is we have the body जिसके साथ हम इस वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हैं. सेकेंड, we have relationships to experience love, respect and care. Then we have relationships जिनके साथ हम we experience love and respect and care. We have roles. Third is roles to be played to potential, means maximum we can play our roles to the best. We have responsibilities to be discharged sincerely. हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें बहुत अच्छी तरह से निभाना है. We have wealth to be used in the worthwhile way. मीन्स हमारे पास जो वेल्थ है, मनी है, प्रॉपर्टी है, उसको भी हमें प्रॉपरली यूज करना है. Instead of remembering that everything is temporary, we believe it will remain ours forever. है ना? It is the biggest illusion. Rather, it's the illusion. भ्रम है हम सबका कि हम यहीं पे ही हमारा ही सब कुछ है. But reality में it is everything is temporary. Instead of being a trustee, we believe everything belongs to us.
ट्रस्टी होने की बजाय हम समझते हैं कि ये मेरा ही है, हमेशा ही ये मेरा रहेगा. Rather than being detached, we get attached and believe it is natural. हमें detached रहना चाहिए, but हम क्या हो जाते हैं, उसके साथ इतना attach हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारा ही है, and we believe it is natural. Instead of enjoying the experience, we live in fear of losing it. Underline. हमें लगता है कि हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते, वी हमें लगता है कि हम उसे खो देंगे. वो जो पर्सन है या जो रोल है या जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले कर रहे हैं, उन सबको वी डोंट एक्सपीरियंस, वी डोंट एंजॉय देम, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर. वी लिव इन द फियर ऑफ लूजिंग इट. वेयर देयर इज अटैचमेंट देयर इज द फियर ऑफ लूजिंग. बाबा कहते हैं ना, मोह जहां होगा वहां पे क्या होगा, मोह इज द विकार है ना, इट इज अ वाइस. तो attachment, where there is attachment, there is a fear of losing. We fear losing people, positions, and possessions. तो हम क्या क्या खोने से डरते हैं, लोगों को खोने से डरते हैं, पोजीशंस को, पोजेशंस को, जो हमारी चीजें हैं उनको खोने से डरते हैं. Our deepest fear is of death, since the body is the first thing we acquired, and our attachment to the body is so strong that we believe the body is I. हम यही मानने लग जाते हैं ना कि मैं ही ये बॉडी हूँ. तो सबसे ज्यादा हमें डीपेस्ट फियर किस चीज का होता है, इसी चीज का होता है कि कहीं हम इस बॉडी को ही ना खो दें. द फियर ऑफ डेथ. वेयर देयर इज ईगो देयर इज अटैचमेंट, and where there is attachment there is fear. In the last page, on the last page we have read that ego is equal to attachment, and now Sister Shivani इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि where there is ego there is attachment and there is fear. So this is an equation worth internalizing. Means we should make it a part of our learning. मतलब हमें माइंड में रखना है कि जहाँ ईगो होगा वहां पे अटैचमेंट होगी, एंड there is attachment there is fear. The journey of life is not only about accumulating. हमें चीजें इकट्ठी नहीं करनी, सिर्फ चीजों को इकट्ठे नहीं करते रह जाना, लोगों को इकट्ठे करते नहीं रह जाना, possessions को नहीं इकट्ठे करना. It also entails using, experiencing and eventually losing them. Means जो जर्नी है लाइफ की, वो इसमें ये चीज भी आती है कि हमें क्या क्या एक्सपीरियंस करना है, कि उन चीजों को यूज करना आना चाहिए. वी शुड एक्सपीरियंस द emotions, and eventually we can lose the people also. We lose people, possessions, positions, and upon dying we lose our body too. हम क्या क्या सिस्टर कह रहे हैं कि हम क्या क्या चीज को लूज करते हैं, क्या क्या हम खो देते हैं, पीपल, लोगों को, पोजेशंस, चीजों को, पोजीशंस को, और अपने डेथ पे हम अपनी बॉडी को भी खो देते हैं. Death is a juncture where we lose our body. Juncture means a point, a particular point in an event. Means किसी एक event में, because life is a journey ना. तो इस life की journey पे जो death का एक juncture है, means at a point we lose our body and lose everything that we had acquired while we were in that body. जैसे किसी की डेथ पे सब कुछ उसका खत्म हो जाता है, मीन्स उसके जो कार्मिक अकाउंट है उस फैमिली के साथ, उस चीजों के साथ वो खत्म हो जाते हैं, तो वो सब कुछ खो देता है. बट द आई नेवर डाइज, इट नेवर गेट्स लॉस्ट, एंड इट हैज नो एंड. मीन्स इट इज इटर्नल, कभी नहीं खत्म होता. आई द सोल, द आई सिंपली कंटिन्यूज इट्स जर्नी ऑफ एक्वायरिंग, experiencing and losing. मीन्स जो आई द सोल है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखती है. बट वी आर सो मच अटैच टू दिस बॉडी. हमें लगता है कि इसकी डेथ हो गई तो इट मीन सोल ऑल्सो डाइज, बट इट इज इन द सोल आई, इट कंटिन्यूज द जर्नी ऑफ एक्वायरिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड लूजिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज टेल टेल साइंस ऑफ ईगो. अब सिस्टर हमें बता रहे हैं कि हाउ कैन वी जज, हाउ कैन वी find out whether the person is egoistic or not.
How can we test it? Interestingly, we find it easier to recognize ego in other people, but not within ourselves. हमें खुद के लिए तो लगता नहीं है कि हमारे अंदर भी ईगो है, हमें लगता है कि सामने वाले में ईगो है. How do we become aware of our own ego? Given that we get busy throughout the day and our awareness is always directed at other people, है ना? हम सारा दिन दूसरों को देखते रहते हैं कि ये ऐसे करता है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये अवगुण है ना. तो कहते सिस्टर ने यही कहा है कि हाउ कैन वी बी अवेयर ऑफ आवर ओन ईगो. हमें अपना ईगो कब दिखेगा? जब हम सारा टाइम दूसरों को जज करने में लगे रहेंगे. Fortunately, there are certain behaviors which are usually expressive of ego and affirm its presence. कुछ certain behavior बता रहे हैं सिस्टर कि कुछ कुछ ऐसे behaviors हैं like when symptoms like ना कि जैसे किसी को फीवर होता है ना, या किसी का हेडेक होता है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो क्या होता है? तो उसके सिम्टम्स होते हैं लाइक कि उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इफ ही और शी इज हैविंग फीवर. सिमिलरली सिस्टर बता रहे हैं कि कुछ सर्टेन बिहेवियर्स हैं which can be seen if a person is ego, and it can affirm its presence also. These are arguing, nagging, comparing, complaining, controlling, judging, justifying, accusing, expecting, competing, reacting, and so on. तो सिस्टर ने चेक करने के लिए कहा है कि हमारे अंदर अगर ये चीजें होंगी तो इट मीन्स वी हैव ईगो विद इन अस. आर्ग्यूइंग, वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग. नैगिंग मीन्स किसी को तंग करना. कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग, है ना, अगर हमारे अंदर ये आदतें हैं तो इट मीन्स वी आर फुल ऑफ ईगो. A person with ego often has a thought like these. अब सिस्टर्स ने कुछ थॉट्स बताए हैं कि अगर पर्सन में ईगो है तो ही और शी विल थिंक लाइक दीज थॉट्स. आई लाइक इट व्हेन एवरीथिंग इज अबाउट मी. मुझे अच्छा लगता है जब सब कुछ मेरे बारे में हो. पीपल ऑफ मी रिगार्ड, मुझे लोग रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे. आई नेवर वॉन्ट टू लूज द पीपल और द थिंग आई लाइक. मैं उन चीजों को नहीं खोना चाहूंगा जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं. वॉट अदर थिंग्स ऑफ मी मैटर्स अ लॉट टू मी, है ना. हम सबको यही लगता रहता है कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, है ना. स्टेटस कॉन्शियस होते हैं बहुत ज्यादा. आई वॉन्ट अटेंशन, अप्रूवल, अप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेंस. मुझे अटेंशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, लोग मुझे अप्रूव करें कि आई एम राइट, अप्रिसिएट करें, मुझे एक्सेप्ट करें. I want people to be a certain way, कि मेरे अकॉर्डिंग दुनिया चले. I want situation to always be favorable. Situations मेरी फेवर में हो. I cannot handle loss, failure and obstacles. I want relationships where people support me. मुझे ऐसे रिश्ते चाहिए जहाँ पे लोग मुझे सपोर्ट करें. I do not like it when anyone outsmarts me or disagree with me. Outsmarts means कोई मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, मीन्स इन लुक्स और इन इंटेलिजेंस. और व्हेन पर्सन डिसएग्रीज विद मी, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस. मैं इतना अच्छा इसमें नहीं हूँ. तो ये थॉट्स अगर हमारे हैं तो इट मीन्स द पर्सन हैज is having ego in him or her. Now, sister is giving an exam exercise for us to check. We can do this exercise in our homework. Check if you tend to create thoughts similar to these, you are encouraged to do a little inner work to become aware of your ego. हमें खुद चेक करना है, सेल्फ चेकिंग है. This is the process of going outside in to see where ego is taking shape. मतलब हमें खुद अपनी सटल चेकिंग करनी है, बहुत सटल चेकिंग करनी है कि कहाँ से वो अराइज हो रहा है, वो ईगो कहाँ से अराइज हो रहा है. Take a moment to do the following. We can do it. First point is write down three behaviors.
अपने ही कोई तीन बिहेवियर्स विच यू मे चूज फ्रॉम द लिस्ट अबव, ऊपर जो हमें लिस्ट दी है सिस्टर ने, उसको उसके अकॉर्डिंग हम चेक, वी कैन टेक एनी ऑफ द above behavior which you relate to. Second, identify the fear behind each of them. उसके पीछे हमारा डर क्या है, कि हम किस वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं. Third, reflect on the attachment linked to that behavior. कि हमारी उसके पीछे क्या अटैचमेंट क्या है, कि मेरे को क्या लगता है कि मैं उसे उसको खो दूंगा. Fourth, reason out what is it that you need to let go. Means the sister has divided the process in four steps. First, fast, then identify the fear, then third is attachment, and fourth is the reason out with what is it that you need to let it go. कि क्या मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से वो मेरा ईगो फिनिश हो. सिस्टर ने आगे एग्जाम्पल दिए हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद अ फ्यू एग्जाम्पल. दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट इज योर बिहेवियर. Behavior like first behavior like criticism. You to feel good about ourselves, we often put others down to criticizing them. We snap at people as, I do not think your idea is good, it will never work. अगर हमारी नेचर क्रिटिसाइजिंग की होगी, इफ वी आर आर बिहेवियर इज ऑफ क्रिटिसिज्म, कि तो हम क्या करेंगे, लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे और लोगों को ऊपर शाउट करेंगे कि तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं है, ये काम नहीं करेगा. तो इसके पीछे हमें चेक करना है कि मेरा किस चीज का फियर है. माई आइडिया इज बेटर, आई एम स्केयर्ड दैट योर आइडिया विल गेट एक्सेप्टेड. तो इस चीज का फियर था हमारा, कि कंपैरिजन होता है ना, लाइक तो वैसे ही सिस्टर कह रहे हैं कि मेरा अपना आइडिया बेटर है, तो मेरे को दूसरे को क्रिटिसाइज करने का एक मोटिव मिल गया कि आई कैन क्रिटिसाइज हिम और हर, कि तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं है. नाउ थर्ड स्टेप वाज कि अटैचमेंट चेक करनी है कि मेरा उसके पीछे क्या अटैचमेंट है. आई आइडेंटिफाई सो क्लोजली विद माई आइडिया, द आइडिया इज मी. मीन्स वी आर अटैच टू आवर आइडिया सो मच, मतलब हमें लगता है कि वो आइडिया ही मैं हूँ. तो मेरा आइडिया अगर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आई विल माई बिहेवियर विल बी ऑफ क्रिटिसिज्म. सेकेंड बिहेवियर इज पोजेसिवनेस. ये हम साथ साथ अपने अंदर भी चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये है. आई थिंक सब में ही है ये, बट हर किसी का जैसे कहते हैं ना बाबा, कि हर कोई नंबर वार है, कोई किसी में कम तो किसी में ज्यादा है. पोजेसिवनेस, when we are possessive about someone, our insecurity makes us say, I saw you having fun with those people at the party last night. जब हम किसी पर्सन के लिए पोजेसिव होते हैं, तो हमें लगता है कि ये शायद वी आर इनसिक्योर. तो उनसे जैसे सिस्टर ने लाइन बताई है, आई सॉ यू हैविंग फन विद दोज पीपल एट द पार्टी लास्ट नाइट. तुम किसी के साथ एंजॉय कर रहे थे पार्टी. तो इसके पीछे हमारा फियर क्या होगा, दिस इज आवर बिहेवियर. देन फियर इज आई एम स्केयर्ड दैट यू लाइक देम मोर देन यू लाइक मी. व्हाट इफ यू लीव मी, कि तुम मुझको ज्यादा लाइक करते हो और मुझे नहीं, और अगर मुझे छोड़ दोगे तो हाउ विल आई लिव. अटैचमेंट, I am emotionally attached to you because we are attached to people ना. तो यहाँ पे people के लिए emotions, we are emotionally attached to you. Don't leave me, I cannot live without you. तो ये हमारी attachment है. Third behavior is inferiority. When unable to reach a goal, we forget our worth and hit at our own self-esteem, saying, I am a failure, I feel like a loser in front of my successful peers. है ना, स्टूडेंट्स में होता है ना ये चीज. दे फील इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. उनको लगता है कि अगर आई आई लूज एनीथिंग, किसी चीज में हार हो जाना या कोई चीज में फेल हो जाना, तो क्या होता है, दे फील इंफीरियर टू देयर पीयर्स. मीन्स दे अपने फ्रेंड्स के साथ दे फील इंफीरियर. लाइक हमने कई बार सुना है कि कोई students they commit suicide
जस्ट बिकॉज कि उनके मार्क्स कम आए, है ना, इसकी वजह से दे कमिटेड सुसाइड. So they are feeling in their behavior was of inferiority. Fear क्या है इसके पीछे? People may ridicule or embarrass me for this failure. Let me withdraw from everyone. तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो इसके लिए बेटर है मैं सबसे दूर हो जाऊं. Fourth, sorry, attachment. I badly wanted to achieve this goal. इसके पीछे attachment क्या है हमारी, कि मैंने ये, जैसे वी अज्यूम ना कि मुझे ये करना ही है, ठान लेते हैं, बट अगर इन केस वी डोंट गेट दैट अचीवमेंट या सक्सेस नहीं मिलती, तो हमें क्या होता है? तो ये हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर उसमें आ जाता है. आई वुड हैव अर्नड मी रिस्पेक्ट, इट वुड हैव अर्नड मी रिस्पेक्ट फ्रॉम माय पीयर्स एंड एवरीवन एल्स टू. मेरे फ्रेंड्स भी मेरी रिस्पेक्ट करते और सब भी मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस वाज माय अटैचमेंट टू माय आइडिया. नेक्स्ट बिहेवियर इज इम्पेशंस, जो कि आजकल बहुतों में है. इम्पेशंस. इम्पेशंस कॉम्प्लिकेट्स लाइफ एंड मेक्स अस अनहैप्पी. है ना? क्या होता है? कोई चीज हुई नहीं हुई, हम फोन पे ही कुछ सर्च कर रहे हैं, है ना, तो क्या होता है? कुछ ऑन नहीं हो रहा, वी कीप ऑन क्लिकिंग क्लिकिंग क्लिकिंग. तो मीन्स इट शोज दैट हाउ मच इम्पेशेंट वी आर. कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई हमारा फोन नहीं उठा रहा, तो वी गेट इम्पेशेंट. Impatience complicates life and makes us unhappy, stressed, and anxious individuals. क्या बना देती है impatience हमें? Unhappy, stressed, and anxious. Who just cannot be in the present. वो present पे नहीं जी सकते. तो person who is impatient, या तो वो future के बारे में सोचेगा या past के बारे में सोचेगा. Without considering why other people say or do things, certain things, we speak in a way that upsets us and others. है ना? कोई अगर हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हमें क्या लगता है? हम क्या करने लग जाते हैं? We start saying or doing certain things, like such as you are taking too long and that is annoying me. Hurry up. है ना? बच्चों को कहते हैं हम, या फिर किसी को भी, अपने बॉस, अपने स्टूडेंट, अपने एम्प्लॉयज को कह सकता है कि तुम इतनी देर क्यों लगाते हो. इम्पेशंस. दे फील इम्पेशेंट, दे बिकम इम्पेशेंट विद अदर पीपल. इसके पीछे फियर क्या है? इफ आई रिमेन पेशेंट, पीपल undue will take undue advantage and become complacent. Work will get delayed. तो लोगों को ये फियर होता है, इस चीज का फियर होता है कि अगर मैं पेशेंट हूँ, मीन्स अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा किसी चीज को सहन करने की या सब्र करने की आदत है, तो लोग मेरा अनड्यू एडवांटेज लेंगे. मतलब जिसे कहते हैं ना कि ग्रांटेड मान लेना. वर्क विल गेट डिलेड. जैसे हमारी नेचर ही है, फिर कोई एक बार प्यार से नहीं काम करता, दूसरी बार प्यार से नहीं काम करता, तो वी बिकम इम्पेशेंट. तो वर्क जो है वो धीरे धीरे डिले होता जाएगा. तो इसके पीछे अटैचमेंट क्या है? आई विल बी हैप्पी व्हेन दिस गेट्स डन, सो आई कैन नॉट वेट, आई नीड इंस्टेंट रिजल्ट्स. तो हमारी अटैचमेंट इसके पीछे यही है कि मैं तब खुश होऊंगा जब ये काम हो जाएगा. हम सब में भी है ये चीज. वी कैन चेक इट. चारों जो सिस्टर ने एग्जाम्पल्स बताए हैं, वी कैन take it as a homework and check it ourselves. It is tempting to assume that ego shows up only because we are in the company of other people, getting into interaction and actions with them. तो सिस्टर अब बता रहे हैं कि ईगो कब शो अप होता है, कब आता है वो हमारे अंदर? when we are in the company of other people. Suppose a person is living alone, कोई भी नहीं है उसके आसपास, जैसे सन्यासी होते हैं, तो उनके अंदर ईगो थोड़ी ना दिखाई देगा, बिकॉज जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, the ego comes into come up, getting into interaction and actions with them. If I simply secluded ourselves, if we simply secluded ourselves, secluded means
फार अवे फ्रॉम द पीपल, मतलब लोगों के साथ नहीं रहेंगे अगर हम, तो क्या होगा? Withdrew from the family and friends, started living alone, far away from everyone. Will our ego vanish? क्या हमारा ईगो खत्म हो जाएगा तब? No. If that happens, we will not know what to do with ego that is already present within us. तो हमारे अंदर वो ईगो उस टाइम खत्म नहीं होगा अगर हम दुनिया से दूर कहीं, लाइक कहीं दूर चले जाए रहने के लिए, वेयर जहाँ पे कोई इंट्रैक्शन ना हो, तब भी हमारे अंदर ईगो है. We will simply continue living with that burden and not know what to change. जब हम इंट्रैक्शन में आते हैं, डे टू डे लोगों के साथ फील्ड में आते हैं, जॉब में आते हैं, तो हम उनकी, वी इंटरेक्ट विद देम, तब हमें ईगो क्लैशेस होते हैं हमारे उनके साथ. तो सिस्टर यही बता रहे हैं कि वी विल सिंपली, अगर हम नहीं रहेंगे, मतलब वी गेट, वी विथड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो हमें उस चीज को, हमारा ईगो फिनिश ही नहीं होगा. Because we will simply continue living with that burden and not know what to change. हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब हमें कुछ बताता है कोई, तब हमें रियलाइज होता है ना कि हाँ, हमारे अंदर अ, ये अवगुण है ना, ये हमारे अंदर कोई खामी है. When someone presses our emotional buttons, we actually get the opportunity to do the inner work of recognizing and getting rid of our ego. सिस्टर कह रहे हैं, कोई जब हमारा किस चीज का बटन प्रेस करता है, आर बट प्रेसेस आर इमोशंस बटन, इमोशनल बटन, इमोशंस का बटन, वी एक्चुअली गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू द इनर वर्क. अगर कोई सब हमारी प्रेज ही करते रहे या अप्रिसिएट ही करते रहे, कोई हमें कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करे या फिर हमें अपनी गलती नहीं बताए, तो क्या होगा? हमें अपने ईगो का पता ही नहीं चलेगा. So we need to be together with others on this journey of defeating ego. तो हमें सबके साथ रहकर, we should we should be in the family and with our friends if we want to defeat our ego. Just इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक सेल्फ चेकिंग चाहिए, जैसे सिस्टर ने ऊपर बताया हमें. So we should do it ourselves. Next topic is ego consciousness, the cause of spiritual amnesia. Consciousness refers to our state of awareness or our belief. मतलब हम क्या हैं? Consciousness. If I am sitting in this body consciousness, so it will be revealed from my words or behavior. तो सिस्टर बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है. इट रेफर्स टू आवर स्टेट ऑफ अवेयरनेस और आवर बिलीफ. कॉन्शियसनेस इज लाइक अ लेंस थ्रू विच वी सी एवरीथिंग, है ना. अब हम सोल कॉन्शियसनेस भी हो सकते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस भी हो सकते हैं. तो अगर हम सोल कॉन्शियसनेस हैं, तो वी विल सी अदर्स एज सोल, एंड इफ वी आर एज द बॉडी कॉन्शियसनेस, we will see everybody as a body. Our consciousness is the foundation on which we conduct our actions and interactions. उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एक्शंस और इंटरेक्शंस होते हैं. As in our consciousness, so will be our intentions, thoughts, perspective, attitude. जैसी हमारी कॉन्शियसनेस होगी, वैसे ही क्या होगा? हमारे इंटेंशंस होंगे, हमारे थॉट्स होंगे, पर्सपेक्टिव्स होंगे, एंड आवर एटीट्यूड, बिहेवियर, संस्कार, पर्सनालिटी, एंड हेंस आर डेस्टिनी. जिस कॉन्शियसनेस में हम होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे सब चीजें होंगी, इंटेंशंस भी होंगे, हमारे थॉट्स भी होंगे, हमारा एटीट्यूड भी होगा, बिहेवियर, संस्कार, एंड इन ऑल आर डेस्टिनी. Ego consciousness is also called body consciousness. Underline. Ego consciousness में अगर हम रहेंगे, it means we are in body consciousness. जिसे बाबा भी कहते हैं ना, मैपन, मैपन का, ये मैं अहंकार आना, that is body consciousness, देह अभिमान. This is because our physical body is the first thing we acquire in life. Besides our roles, relationships, positions,
and possessions exist only as long as we are in the body. Because सबसे पहले हमें यहाँ पे आके क्या मिला, इस दुनिया में आके सबसे पहले हमें ये बॉडी, फिजिकल बॉडी मिली. तो therefore we are very much attached to this, and so we are also attached to our roles, relationship, position and possession. ये तब तक हैं जब तक हम इस बॉडी में हैं. The moment we lose the body, we lose all of those too. जब हम इसको छोड़ेंगे, इस बॉडी को, तो हम सब चीजें भी छोड़ देंगे. What is our consciousness about who we are? The I inside is inside, and we have layer upon layer of all that we have acquired on top of it. तो सिस्टर पूछ रहे हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस, व्हाट इज आवर कॉन्शियसनेस अबाउट हु वी आर. कल हमने पढ़ा था ना आई और माई के बारे में. तो आई और माई इज डिफरेंट. तो आई के ऊपर इतनी सारी लेयर्स चढ़ चुकी हैं कि वो पता ही नहीं है कि रियलिटी में आई है क्या. This is why we forget the I within, and therefore we often ponder, who am I? What is the purpose of my life? हम ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ. I have everything, but why do I feel so empty within? हम में से भी कई लोग सोचते होंगे, बाबा का ज्ञान जिन्होंने लिया है, कि हमने जब ज्ञान में नहीं थे तो हमें लगता था, कि मुझे तो लगता था ये चीज कि हम यहाँ पे कौन है ना, ये बॉडी हम है या कुछ और है. बट जिसे कहते हैं ना, बाबा ने सब तीसरा नेत्र खोल दिया हमारा, थर्ड आई. उसकी वजह से हमें सब पता चल गया कि अब हम कौन है, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, सब कुछ बाबा ने आके हमें बता दिया. व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. देखो, आई हैव एवरीथिंग, बट व्हाई डू आई फील सो एम्प्टी विद इन. We call this spiritual amnesia, as we have forgotten the self. जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है, जिसकी याददाश्त चली जाती है, लाइक, तो सिस्टर ये कह रहे हैं कि जैसे हमें अपना पिछला कुछ भी याद नहीं. When someone loses their memory and forgets who they are, how does their life change? किसी की अगर मेमोरी लॉस हो जाए तो क्या होगा, तो उसको वो कैसा उसे बताया जाएगा कि हाँ आपका नाम ये है, आप ये हो, आप यहाँ काम करते हो. तो सिस्टर एक जस्ट एक कंपेयर कर रहे हैं कि किसी की मेमोरी लॉस हो जाए तो वो सब कुछ भूल जाएगा, तो उसकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी. दे फील लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, scared and insecure. This happens to us at the spiritual level because we have forgotten who the spirit or I is. है ना. सिस्टर कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल लेवल में ही हमारे साथ होता है, कि हम अपने आप को ही भूल चुके हैं कि वी आर द सोल. टुडे वी आर बॉडी कॉन्शियसनेस कॉन्शियस. दिस मीन्स हम इस टाइम क्या हैं, बॉडी कॉन्शियस हैं. और इसका मतलब क्या है. If I am in the consciousness of being an Indian, I see the people from another country as foreigner. अब सिस्टर हमें एक किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बॉडी कॉन्शियस क्या चीज होती है. If I am in the consciousness of being an Indian, I see people from other country as foreigner. If I am the conscious in the consciousness of being a CEO, I see the staff in the office as my employee. If I am in the consciousness of being a servant, I see my employer as my master. तो इस सिस्टर ने तीन एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर मैं इंडिया का हूँ तो मुझे बाकी सारी कंट्री के फॉरेनर्स लगेंगे, और इफ आई एम कॉन्शियसनेस ऑफ सीईओ तो मुझे सब बाकी सब एम्प्लॉयज लगेंगे. एंड इफ आई एम इन द कॉन्शियसनेस ऑफ सर्वेंट तो मुझे बाकी आई सी माई एम्प्लॉयर एज माई मास्टर. When we are operating out of the consciousness of ego, we interact through the labels and images of our age, role, relationships, positions, or possessions. जब हम इस कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, तो हमें क्या दिखेगा, सबके लेबल्स दिखेंगे, सबकी इमेजेस दिखेंगी कि वो किस एज के हैं, रोल क्या प्ले कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स क्या है, उनकी पोजीशंस क्या है, और उनके पोजेशंस क्या है. कंसिडर थ्री एवरीडे सिनेरियोस. सिस्टर अब बता रहे हैं कि तीन सिनेरियोस आप लाइफ में अपने डेली चेक कर सकते हैं. फर्स्ट, in the morning we sternly say to the driver, get the car, take me to the office, hurry up. हम कहते हैं ना,
हमने कहीं जाना है तो ड्राइवर को कहेंगे कि जल्दी करो, मुझे ऑफिस लेके चलो. Second, at office, we say to our boss, Sir, kindly approve me leave. I will complete my pending task today. वहां पे जॉब पे जाके ऑफिस में क्या कहते हैं कि अपने बॉस को बहुत ही काइंडली वी रिक्वेस्ट हिम और हर टू grant me leave. Third, after coming home, we yell out at our children, just go to your room, otherwise you will be in trouble. घर आने पर हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि अपने रूम्स में जाओ. Note the difference in our tone, body language, vocabulary and behavior in each case. तीनों एग्जाम्पल में हम अपनी क्या क्या चेक कर सकते हैं, टोन, बॉडी लैंग्वेज, vocabulary and behavior. We consider this behavior as normal, and that is the reason for anger, irritation and stress, which are also believed to be normal. तो सिस्टर कह रहे हैं कि इन तीनों बिहेवियर में we are experiencing only anger, irritation and stress, जिसको कि सिस्टर कह रहे हैं कि आजकल नॉर्मल मान लिया गया है. Ego is like the blanket vice on top of all other emotional disturbances. Underline कि ego क्या है. Ego is like the blanket vice, मतलब एक विकार है जो कि सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर है, हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के ऊपर, on the top of all other emotional disturbances. The moment ego is perceived as normal, then all other negative emotions will also fall into the category of normal. जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे कैटेगराइज किया गया कि ईगो के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं. जैसे कुछ दिन पहले मुरली में भी था, बाबा ने क्रोध के ऊपर कहा था, एक होता है महान क्रोध, एक होता है चिड़चिड़ापन, और एक होता है आई कांट रिमेम्बर. बाबा ने तीन दिए थे, तो चेक करने के लिए कहा था हमें. तो ऐसे ही ईगो जो है वो टॉप पे है, और उसके अंदर जो बाकी सारे नेगेटिव इमोशंस हैं उसके अंदर आते हैं, और उसको हम नॉर्मल मानते हैं. However, once we transcend ego, all our vices will automatically relinquished. अगर हम अपने ईगो को ही खत्म कर दें तो बाकी सारे जो हमारे जो वाइसेस हैं, जैसे सिस्टर ने कहा है एंगर, इरिटेशन, स्ट्रेस, ये सब छोटे छोटे जो इसके पार्ट्स हैं वो सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे. Life is in a society calls for certain external hierarchies among people to ensure smooth day-to-day functioning. हम सब सोसाइटी में रहते हैं ना, we live in a social circle. तो क्या सोसाइटी क्या मांगती है कि सभी हैं यहाँ पे, बड़े भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, तो सब they all are doing their different duties or roles. They are playing their roles. This is why everyone is assigned a different role, position, relationships, and designation. Someone is a president and someone else is a peon. है ना, सबको अपने अपने रोल्स मिले हुए हैं, डेजिग्नेशंस मिली हुई हैं. कोई प्रेसिडेंट है तो कोई पियोन है. Someone is a mother and someone else is a child. We label the roles and position higher and lower. हम क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं किस चीज को, पोजीशंस और रोल्स को, कि ये हाई पोजीशन है, ये लो पोजीशन है. बट एट some point we get attached to our roles and make them our identity. हम क्या करते हैं, उसको अटैच हो जाते हैं अपने रोल के साथ और उसको अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं. Higher or lower roles translate into people being treated as superior or inferior. जो हायर और लोअर रोल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सुपीरियर मानने लग जाते हैं या इंफीरियर मानने लग जाते हैं, thus creating ego. Let us understand that roles and positions are based on what we achieve by doing according to our intelligence, talent, skill and effort. तो सिस्टर कह रहे हैं कि जो हमारे रोल्स और पोजीशंस हैं, they are only achieved by us by our doing according to our intelligence, talent, skill and effort. ये सब हम अचीव करते हैं. So it is the roles and positions
which are higher or lower, not the people. Role higher or lower हो सकता है, ना कि लोग. Note that ego need not always make us feel superior to someone. It can also make us feel inferior to someone. है ना? ईगो जो है वो जरूरी नहीं है कि हमें सुपीरियर फील कराए, हमें इंफीरियर भी फील करा सकता है. तो आज यही तक पढ़ते हैं. So everyone can share the their takeaways today. I will request everyone to switch on their cameras, please, and share their takeaways. Be short and sweet. Raise your hands. Yes. Yes, Vipin brother. Yes, Vipin brother. Yes, Vipin brother, you can speak. Okay, sorry, I'm mute. Am I audible? Yes, brother, you are audible. My takeaway from today's session is we need to act on our ego. For that, we should be with the people. We do not go far away and thinking that we can work on our ego. Yeah, very Thank you. nice. Next is, and Shashi sister. Om Shanti, everyone. Today, I read about the author, Sister Shivani told us that different patterns means how ego arises and different forms of egos in various thoughts uh, like body conscious and feelings inferior to ourselves and for other also. And also she also told about that how it is the main cause means it is superior means it is the main cause of every inferior feelings. And how it can be relinquished, the steps she also told that how it can be relinquished ego. And mm, that's all. Okay, very nice sister.
Om Anyone Shanti. else? Om Shanti. और एक क्या था? ओम शांति। Om Shanti, Anuradha sister. या टुडे सेशन दीदी ने बताया कि ईगो के बारे में बहुत विस्तार से बताया कि ईगो क्या है। ईगो अटैचमेंट है टू द इमेज, और जिसकी वजह से वी गेट फियर ऑफ लूजिंग थिंग्स। जैसे एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि एक 80 इयर्स का जो मैन है, लाइक कोई भी, उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्वायर की है अपने जीवन में, लेकिन अंत में वो जितना भी जो भी एक्वायर किया वापस उसको अ, वो छूट ही जाता है। तो एक मिनट, वो सब जो सिस्टर भी आपकी क्रिएशन। आवाज क्लियर नहीं आ रही सिस्टर, क्रैक हो रही अभी आवाज आ रही है? है। या अब क्लियर है। हाँ, तो आप जितना भी एक्वायर कीजिए, पोजीशंस, पोजेशंस या रिश्ते, सब कुछ छूट जाने हैं। तो जीवन ही है कि सिर्फ एक्वायर करना जीवन नहीं है, एक्वायर करना और फिर छोड़ना। We have to experience them and then eventually losing them. This is called life. So people are scared when they lose. So this is the main reason कि जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, भय के कारण होता है कि हम कहीं कुछ छूट ना जाए, इसी के कारण। और अपना बहुत अटैचमेंट रहते हैं अपने इमेज को लेकर के, सोसाइटी में या फिर कोई भी चीज। So ego is like a blanket voice. Under this voice, all other voices are hidden. So if you work on ईगो पर विजय प्राप्त करने के लिए अगर आप वर्क करोगे, तो आपको सभी पर विजय प्राप्त इजी से हो जाएगा। और फिर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जस्ट लाइक आप एक ड्राइवर से कैसे बात करते हो, ऑफिस में बॉस से कैसे बात करते हो, और बच्चों से कैसे बात करते हो। एक समान आपका व्यवहार होना चाहिए, सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी पे क्रोध किया या कहीं पर ऐसे। दिस इज ईगो। अगर आप लाइक, और फिर हम अकेले में विजय प्राप्त नहीं कर सकते, हमको पता भी नहीं चलेगा। इफ यू आर लिविंग अलोन, you will not even come to know that you have ego. It will only या come when you have interactions with people. और that's when ये inferior superior complexes, यही मेन विकारों की जड़ है। और या yeah, and they have given some criteria how to know whether I have ego or not. Like if I have criticism, possessiveness, inferiority, impatience। कोई लोग पोजेसिव भी होते हैं कि कोई हमारे साथ ही रहे, लाइक अगर आप अटैच्ड हो जाएंगे किसी दोस्त से या स्पाउस से, वो किसी और से बात भी करे तो भी आपको जलन होगी। तो ये ईगो का है। एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी बहुत रहते हैं। और इम्पेशंस होना क्रोध में आता था, पर अभी दीदी ने बताया कि इम्पेशंस इज अ पार्ट ऑफ ईगो, मीन ईगो के साइन है। एंड ईगो इज नथिंग बट ए स्पिरिचुअल अमनीशिया। अमनीशिया मतलब बेहोशी, कि आप अपने आप को बेहोश, अपनी आइडेंटिटी भूल गए हो। तो दिस इज व्हाट I have understood from today's session. Thank you. वेरी नाइस सिस्टर। एनीवन एल्स वांट टू शेयर?
Okay. So today's homework will be sent in the group, and let's end the meeting. की रुख जाने दे सिसकी थम खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल हम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे उंगलियों से कल की रेत बहने दे आज और अभी में खुद को रहने दे जाने दे सिसकी थम जाने दे इस पल की ये गुजारिश है मरना क्यों जी लेना बूंदों को पी लेना तेरे ही सपनों की